I got to know a little before that. Uh, it obviously is a big responsibility and an even bigger honor. So very excited to lead my country in that format. And yes, the last few months have been very exciting for me. But I'm really looking forward to what the future has. I want to stay as present as possible and don't really want to look back on what I've been able to achieve or what we as a team have been able to achieve. Just want to look forward and win everything that we have in the upcoming months. पहले भी होते थे टीम डिनर्स, किसी भी टूर में आप जाते हो तो ज़्यादातर प्लेयर्स बहुत बिजी रहते हैं अपने बहुत सारे प्लेयर्स की अपनी फैमिलीज हैं. ग्राउंड में हम मिलते हैं, साथ में इतना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, बट बहुत सारी कॉन्वर्सेशन सिर्फ क्रिकेट की होती है. तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी टीम के लिए आप एक दूसरे को ऑफ द फील्ड भी थोड़ा जाने. तो आई थिंक ये टीम डिनर्स वगैरह जो हम करते हैं, ये हर सीरीज में 2 या 3 बार हमारी कोशिश रहती है कि टीम एक बार आए साथ में. उतना बहुत लाइट माहौल रहता है, कोई ऐसी नहीं तो हर बार टीम मैच में आ रही है, प्रेशर सिचुएशन है, तो वो सब चीजें हम पहले से भी करते हैं. सर आई थिंक उसमें वो आईसीसी का डिसीजन है कि 2 टायर होना चाहिए या नहीं, बट आई फील एज अ जो भी क्रिकेटिंग नेशन जो भी क्रिकेट खेलता है, अगर आपका रेड बॉल का बेस बहुत स्ट्रांग है तो आप ओडीआई और टी20 में ऑटोमेटिकली अच्छा करते हैं. आप कोई भी टीम्स उठा के देख लीजिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी टीम्स की टेस्ट टीम्स बहुत अच्छी हैं. वो नेचुरल सी चीज़ है कि आपकी वनडे और टी20 की टीम अच्छा करेगी. उसमें आई डोंट नो, उनके में भी प्लेयर्स का फोकस ज़्यादा टी20 पे है, लीग्स पे है. तो जब आपका फोकस सिर्फ उस पे होता है तो आप जो बेस है गेम का, जहाँ से गेम शुरू हुई है, जब वो भूल जाते हैं तो स्ट्रगल आई थिंक वहाँ से शुरू होता है किसी भी कंट्री का. तो हमारा भी कॉन्शियस एफर्ट यही रहता है कि अगर आप कोई भी कंट्री, कोई भी टीम, अगर आप टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हो तो नेचुरल बात है कि ओडीआई और टी20 ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी टीम होगी, आपके अच्छा बेस है, तो अच्छे आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, अच्छे प्लेयर्स रहेंगे. I don't really think he's got a lean run. He got 1 inning in the first match in Oval. He played the crucial innings of 40 runs on that wicket where the ball was seaming. The match before that, he scored a 50 in Manchester. You have to, you can't. Not every match everyone is going to score 100. You have to give young players more opportunities they are still trying to figure out their game, and we believe that you have to see someone's first potential and then see their game in the entirety, not just judge someone from 1, 2, 3, 4 matches. Once you have given someone enough matches, say 6, 7, 8 matches, then you can sit back and have a think over it, where he needs to learn, or if he needs to play some more domestic matches or play some more India A games. But as of now, we think he is the man for us, and he's someone that can play for India at number 3 for a very long time. No, so not really. I just think about what's the best possible option for us in that situation. Like even in the second innings, after lunch, when I gave the ball to Bumrah and Siraj, I thought the ball might reverse a little bit. Going just after lunch, it's an easy option to start the spinners from both, and then let's see. Obviously the spinners are gonna get us out, but I just wanted to know, there could be a situation in the second match where the ball is reversing and there isn't much happening from the wicket. Playing against West Indies here or playing against South Africa, where the ball, maybe we are fielding first on day 1 and the ball isn't spinning that much. So I see how you can build your plans if the situation is not with you, and also what is the best bowling option in that on that given day or on that given condition. Sir, if there would be opportunity for him, definitely we would be looking to play him. As of now, we want to play our strongest 11 because WTC is something you have to win. I think almost 70% of your matches to be able to secure a spot to be able to play the finals.